So we are going to start with chapter 2, that is formulas and functions in Excel. So बच्चे already in the 6th class you have studied little bit about the Excel software. So can anybody tell me what is Excel? Why we are using Excel software? Any one of you? Yes, Savya? It is a software used to create and format spreadsheets. Okay. Karthik? Ma'am, MS Excel is a software that helps us to do calculations and helps us to format and create spreadsheets. Right. So Excel is a spreadsheet software. This is a spreadsheet software that is used to perform calculations. So where you are performing the calculations, that is the Excel. So you might know that in Excel, there are rows and columns. Data is organized in the rows and columns like this. इसी तरह से है what we call to the horizontal organization. This is rows and the vertical organization is called columns. यही आपने स्टडी किया ना. So verticals are the columns and horizontals are the rows. Where a particular row and column intersects, this is called cell, right? And this is the active cell. Now what is active cell? Active cell is a cell that is surrounded by a black thick border. This is surrounded by a black thick border. And active cell means where your cell pointer will move on. जहाँ पे भी presently आपका cell pointer होगा, that is your active cell, right? And rows are starting from 1, 2, 3. Columns are starting from A, B, and C. After Z, the last column. After Z, the column is AA, AB, AC, and so on. Clear? This thing is clear? Organization of Excel window composed of rows and columns, and the intersection of row and column is called a cell. Now there are two important components in Excel, that is name box and formula bar. Name box and formula bar. What is name box, बच्चे? Name box. Yes, ma'am. Name box shows the current location of the active cell. Yes, that will give you the address of the active cell. Name box will give you address, or you can say location of active cell, and in the formula bar there will be a content of active cell. Content of active cell will be in the formula bar. Now for example, if I'm saying this is my active cell, so let's say in this the content is 30. So what will be in the name box and formula bar now? What will be in the name box? In the name box, as you already discussed, here it will be an address or location. So what will be in the name box according to this? Give answer in the chat box. हाँ जी बताओ मुझे name box में क्या आएगा? Yes, that will be the address, that will be the location. Now location here is, you can see A2, A2, right? So in the name box, it will be A2, and in the formula bar, the content will be there. The content is 30.
That's why in the formula bar there will be 30, right? Clear बच्चे? Okay, now next thing, what are formulas? What are formulas? So formulas simply means when you are applying certain operation on the operands. Formula means when you want to evaluate something, you want to evaluate expression, but in that expression there are some operands and operation. Which kind of operation you want to perform on a particular operand? So first thing regarding the formula, formula will always starts with equal to sign. Formula will always starts with equal to sign, and then there are some operands and operator. ये जो 30 और 5 हैं, ये दोनों क्या हैं? Operands, and this plus is operator. Similarly, A and B are operands and plus is operator. Clear? This thing clear, bache? Now you can see in A1 I have given, let it be A2. A2 me I am giving the value 30, and in B1 I am giving 5. So I am referring to the cell addresses, that is A2 and B1. So in Excel we will be working on the formulas and functions by referring to the cell addresses. हमने किसको रेफर करना है? We will refer to the cell address. आपको सेल एड्रेस लोकेशन पता होनी चाहिए. लोकेशन का कंटेंट वहां से उठा के you will be applying or you will be making one formula. So formula is always starts with equal to sign. Without equal sign your formula will not be evaluated. The meaning of formula is clear to everyone. Now from the book you can mark the definition of the formula. So formula is a mathematical expression that includes operands and operators. हमने यहाँ पे बात करी ना, operators and operands to evaluate the result. Formulas are used to perform calculations like addition, subtraction, division and multiplication. In Excel, the formulas will always start with equal to sign. Formulas will always start with equal to sign, followed by operands and operators. Operands here means cell addresses. Clear? Operands means cell addresses. Now in the book, the example is given equal to A1 multiplied by B1 multiplied by C1. So asterisk symbol, the star symbol is used to represent a multiplication. You will not write it like this. This is X for computer. So when you want to depict a multiplication, put asterisk sign, star sign. Okay. So in this formula, we have started with equal to, and we are referring to the three cells, that is A1, B1 and C1. Clear, bacha? Any doubt till now? Okay. Now next, no more में underline करो. Any variable on which the operations are performed are called operands. जिसके ऊपर हम कोई operation perform कर रहे हैं. For example, हम A1 और B1 के ऊपर कोई operation perform कर रहे हैं. So these are called operands. Definition, but it's given in the book on page number 16. Formula is a mathematical expression that includes operands and operators to evaluate the results. And these are used for the calculations. You got the definition from page number 16? Yes? Okay. Now, the next is how to enter the formula. So, अभी तक हमने बात करी कि formula क्या है, formula बनेगा कैसे, formula start कहाँ से होगा, from equal to sign, and we will be applying certain operations on the operands. The next thing is how you are going to enter the formula. Formula को enter कहाँ पे करेंगे? So there are two ways.
Either you can directly enter the formula in the formula bar. This is the first way. Secondly, you can directly enter the formula by double clicking inside the cell. Double clicking inside the cell. Now look here. आपने जहां पे भी फॉर्मूला एंटर करना है, सिंपली क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर सेल. लेट्स सी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करना है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस सेल, क्लिक हियर, फॉर्मूला बार विल गेट एक्टिव, टाइप द फॉर्मूला हियर. दिस इज द फर्स्ट वे. So we will be doing this practically also tomorrow. I will show you how to do this practically also. But लेकिन पहले concept समझ लो. So simply one click, single click on a cell means आपने cell को select कर लिया. After selecting, formula bar will get active. Type the formula in the formula bar. Second method, directly double click inside the cell. किसी भी cell के ऊपर double click करेंगे, वो सेल आपका एक्टिव हो जाएगा. आफ्टर डबल क्लिकिंग द सेल विल गेट एक्टिव एंड देन यू कैन एंटर द डिजायर्ड फॉर्मूला. क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर बच्चे? हाउ टू एंटर द फॉर्मूला? सो अंडरलाइन फ्रॉम द बुक. इन एक्सेल यू कैन टाइप द फॉर्मूला आइदर इन द फॉर्मूला बार और आइदर इन द सेल. डबल क्लिकिंग इनसाइड द सेल. व्हेन यू टाइप अ फॉर्मूला इट विल आल्सो गेट डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार. जब आप डबल क्लिक करके सेल के अंदर भी फॉर्मूला टाइप करेंगे ना, इवन देन दिस फॉर्मूला विल बी अपीयरिंग इन द फॉर्मूला बार. हमने पहले ही बात करी है, एक्टिव सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में अपीयर होता है. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू विल एंटर द कंटेंट इन अ पर्टिकुलर सेल, एट दैट टाइम दैट सेल विल बी एक्टिव सेल. उस टाइम पे वो वाला सेल आपका एक्टिव सेल बन जाएगा और उसका कंटेंट कहाँ पे अपीयर होगा? इन द फॉर्मूला बार, राइट? एंड Then you have to accept the entry. जब आप डेटा एंटर कर रहे हो सेल के अंदर, आपको डेटा अपना एक्सेप्ट करना है, तो you have two ways for entering the data. Either you can press enter key from the keyboard. You can press enter key from the keyboard. Second way, you can press enter button on the formula bar. Formula bar के पास बच्चे हमारे पास two buttons होते हैं, enter, cancel. This tick is called enter button and this is called cancel button. Enter button, cancel button. So when you have entered the data, now you want to set that data. आपको data entry अपनी setting करनी है, तो आप enter की भी press कर सकते हो keyboard से, और alternatively you can press this tick button on the formula bar. So this way your data will be entered. And in case you want to delete your data, you want to cancel your entry, simply select the data in a cell by single click and then click on cross button, that is the cancel button. So enter button, underline, it evaluates the value of the formula. It works like pressing the enter key only. Cancel button will cancel the operation that is to be performed on a particular operand. It will cancel the action. Okay? Now, any doubt till now? To anyone? Okay. So let's move on now. कि हमने फॉर्मूला लगाना कैसे है. So we will be making one worksheet for that. A simple worksheet that is given in the book also. So let it be, I am entering the name of items here, name of items that you have purchased and a particular price for a particular item. ठीक है, अब इतना ही कर रहे हैं. Let it be, this is the total amount that you have to pay. Now we have to calculate total amount that you want to pay to a shopkeeper. आप कितना amount pay करोगे? So here we have to find or we have to apply the formula for calculating
total amount that is payable to the shopkeeper, right? So what will be the formula here? Simply refer to the cell addresses. आपने cell addresses को ही refer करना है. First thing, formula कहाँ पे लगेगा? In the cell. This is C1, 2, 3, 4 and 5. In the cell C5. Formula will be applied in the cell C5. And we know that formula starts with equal to sign. Formula starts with equal to sign. Now we want to add them. तभी हमारे पास टोटल अमाउंट निकलेगा जितना अमाउंट हमने पे करना है, राइट? वी विल बी एडिंग इट. सो प्लस ऑपरेटर विल यूज. नाउ व्हाट आर द ऑपरेंड्स इन दिस केस? हमने कहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है? ऑपरेंड्स मींस द सेल एड्रेसेस और द लोकेशन. So this is C2. C2 equal to C2 plus C3 plus C4. Clear? C2 plus C3 plus C4. So this is the formula that you will enter in the cell C5, and after that you will either press enter key from the keyboard or you can click on the enter button on the formula bar. So once you will apply this formula, the particular amount will be calculated and here it will show you the exact amount. Clear? The formula here is clear कि हमने कैसे formula ये frame किया है. Any doubt? I am making a result sheet. In the cell A1 there is roll number, then student name, marks in a particular subject, so we have to find the total marks obtained by each student. Let it be there are 5 students in the class. आप कोई भी डेटा डाल लो, यहाँ पे सारा डेटा it's given. These marks are given in a particular subject of all the students, but we have to calculate the total marks obtained by each student. हर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो वी विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर दैट. सो फॉर्मूला विल स्टार्ट विद इक्वल टू साइन. इक्वल से स्टार्ट होगा. करना क्या है? हमें अमन के इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर के मार्क्स को ऐड करना है. सो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Tell me the formula that we will apply in the cell F2. Yes, Harmeet. Yes, ma'am. Ma'am, C2. It's C2 because English के marks कहाँ पे हैं? In the cell C2. That is C2. Next. Plus D2. Plus D2. Plus E2. Plus E2. So this will be the formula, right? Yes, ma'am. F2 में निकाल रहे हैं. हमें अमन के मार्क्स को ऐड करने की. अमन ने कितना टोटल स्कोर किया है? टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अमन. तो अमन के मार्क्स इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर के मार्क्स ऐड हो रहे हैं. इंग्लिश इज गिवन इन C2, दिस इज D2, दिस इज E2 and we are adding on them. After that, pressing the enter, we will get the answer. And when we have to find the marks for the Raman, that is C3, D3, E3. यही फॉर्मूला बनेगा for the next cell, right? Chahat, why you are adding B3? B3 तो text है. That is the name of the student. आप name को थोड़ा ऐड कर रहे हो. You are adding the numeric values. मार्क्स को ऐड करेंगे तभी उसके टोटल मार्क्स हमारे पास आएंगे. सो दैट विल बी C3, D3 एंड E3.
बट आपने फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार ही लगाना है. यू नीड नॉट टू टाइप द फॉर्मूला एवरी टाइम. आपको हर बारी फॉर्मूलाज को खुद टाइप नहीं करना. क्लियर? दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, कैन यू हैव अप्लाइड द फॉर्मूला हेयर. आपने एक बारी फॉर्मूला लगा लिया. वी हैव अ फीचर कॉल्ड ऑटोफिल. Autofill, right? What autofill will do? It will automatically fill the values in the next cells by dragging a fill handle. फीचर का नेम है ऑटोफिल और यहाँ पे सेल के नीचे हमारे पास कुछ इस तरह से सिंबल आएगा. इस सिंबल को हम कहते हैं फिल हैंडल. We call it as fill handle. We will simply drag the fill handle where we want to copy the formula. We will drag the fill handle and automatically using the autofill, the formulas are copied onto the other cells. आपका सेल का जो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी होता जाएगा, कॉपी होके वो नीचे आ जाएगा. क्लियर? You need not to type formula for each and every entry. Simply write only once and then drag it using the fill handle. Any doubt to anyone in this question now? Yes. Clear? So we will be doing this practically also tomorrow. Now in this question बच्चे, we have applied the formula on the numeric entries. ये numeric entries थी, ये numbers है ना, English, Maths और computer के marks हैं. ये marks क्या हैं? Numeric entries हैं. So we are applying the formula on the numeric entries, right? Next thing is, what if I want to add text entry? अगर मेरे को टेक्स्ट एंट्री पे कोई फॉर्मूला लगाना है, इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक फॉर्मूला. So there is one text formula also. Now text formula means when you are adding the text values. जब आपको अल्फा न्यूमेरिक डेटा को ऐड करना है, टेक्स्ट वैल्यूज को ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन द सेल B1, चलो पहले मैं सिंपल बता रही हूँ. अगर आपके पास एक नेम है, फॉर एग्जाम्पल हरमीत सिंह, ठीक है. सो फॉर एडिंग द टेक्स्ट, जब आपने न्यूमेरिक को ऐड किया तो आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया? प्लस ऑपरेटर. न्यूमेरिक वैल्यूज में हमने एडिशन के लिए क्या ऑपरेटर यूज किया? प्लस. बट फॉर एडिंग द टेक्स्ट वैल्यूज वी विल बी यूजिंग द ऑपरेटर एंड, M%. इसको आप इंग्लिश में एंड बोलते हो ना, तो दिस इज M%. and this operator is called concatenation operator. This operator is called concatenation operator. Now what is concatenation? Concatenation means joining of text values. Joining of text values, or you can say strings. String values, हम text values को string values भी बोलते हैं. Joining of text values or joining of string values, and this is done with the help of the M% symbol, that is concatenation operator. Clear? Now let's look how we are concatenating the text values. So I am having these two values of the text. अब मुझे इसको concatenate करना है, मुझे join करना है. So how I will do? Let it be A1 में मेरे पास पड़ा हुआ है हरमीत, and in the cell B1 I am having the text Singh. Now I am going to apply the formula in the cell C1. So what will be the formula in the C1 for joining this A1 and B1? A1 and B1. So what will be the result? जब मैंने A1 और B1 को यहाँ पे ज्वाइन किया, A1 में क्या पड़ा था? हरमीत. B1 में क्या पड़ा था? सिंह. तो दिस इज इक्विवेलेंट. इसका आंसर क्या आएगा? लाइक दिस. इट इज ज्वाइनिंग बोथ द वैल्यूज. दोनों वैल्यूज इकट्ठी आएंगी, ज्वाइंड होके आएंगी. राइट.
Now, if I want the space should be there, यहाँ पे in between बीच में space आए, तो space कैसे आएगी? Voice is not audible. Now it is clear. Voice is coming. Now tell. Okay. So if I want a space should be there in between these two words. So how I will going to write this formula? A1 में हरमीत पढ़ा है. M% I am joining this with space. स्पेस के साथ में इसको ज्वाइन करूंगी तो मैंने डबल कोट्स के अंदर वन सिंगल स्पेस देगी फ्रॉम द स्पेस बार की. ठीक है, यू हैव टू प्रेस स्पेस बार की. नंबर ऑफ स्पेसेस यू वांट टू गिव यू कैन गिव इन द डबल कोट्स. देन अगेन M%, बिकॉज मैंने अभी A1 को स्पेस के साथ ज्वाइन किया है. A1 में क्या था? हरमीत को मैंने स्पेस के साथ ज्वाइन किया है. अब स्पेस के साथ मुझे B1 का कंटेंट भी ऐड करना है. तो A1 हरमीत स्पेस को फिर से ज्वाइन किया विद सिंह. So this way I will get the result space sing. Now there will be a space in between. If you will directly join it, there will be no space, and when you are joining with the help of the space in between, so 2 times M% will be there. So according to this, we will be getting the result like this, where there will be a space in between, right?